Hello everyone, welcome back to Strike. My name is Sakshi Dhamankar and yes, this is going to be the closing session. And yesterday हमें काफी एक अच्छी अप मूव जरूर देखने को मिली थी in the beginning when the markets had opened. But towards the closing थोड़ी बहुत हमें हल्की पॉजिटिविटी के साथ ही क्लोजिंग देखने को मिली थी. And on 25th of June clearly we could see कि मार्केट में निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ने दोनों ने एक हम कह सकते हैं थोड़ी बहुत कमजोरी के साथ तो नहीं कहेंगे लेकिन थोड़ी बहुत स्लाइटली पॉजिटिविटी जरूर देखने को दिखाई थी हमें. इसी के साथ साथ अगर निफ्टी की बात करें कहाँ पे क्लोजिंग देखने को मिली थी, सो 24,052 पे निफ्टी क्लोज होता हुआ नजर आया था विच वॉज पॉजिटिव बाय 31 पॉइंट्स. वेयर एज अगर हम कल के दिन की शुरुआती दौर की बात करें यानी कि ओपनिंग की बात करें तो यहाँ पे हमने थोड़ी और ज्यादा तेजी जरूर देखी थी, लेकिन क्लोजिंग के टाइम पे सिर्फ 30 पॉइंट्स ऊपर निफ्टी ने क्लोज किया. ऑन दी अदर हैंड बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी ने क्लोज किया 58,187 पे विच वाज अप बाय ओनली 36 पॉइंट्स. सो अगर आप देखें तो यहाँ पे निफ्टी में 0.12% एंड बैंक निफ्टी में 0.06% की ही तेजी हमें देखने को मिली थी. इसका मतलब ये है कि निफ्टी वाज मच मोर पॉजिटिव देन बैंक निफ्टी एंड क्लियरली यहाँ पे जो कि तेजी पूरे दिन हमें देखने को मिली थी टुवर्ड्स द क्लोजिंग वो काफी कम होती हुई नजर आई. सो व्हाट वाज द मेन रीजन फॉर दैट विल डिस्कस ऑन दैट एज वेल. उसी के साथ साथ ये भी डिस्कस करेंगे कि हमें अगले हफ्ते में क्या करना है एंड हमें कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जिन पे हम ज्यादा ध्यान रख सकते हैं. बट बिफोर वी मूव ऑन टुवर्ड्स द डिस्कशन देयर इज एन इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट फॉर एवरीवन. वी आर गोइंग टू बी हैविंग अ वेबिनार ऑन दिस संडे, that is 28th of June at 10 a.m. The webinar is going to be on a very specific tool, that is RRG. You might have also heard about this tool, but if you have not, make sure that you attend this particular webinar. Varun sir is going to be addressing it. अगर आपको कोई भी सवाल है अबाउट आरआरजी, कैसे इस्तेमाल कर सकते हो आप उसको या फिर अपनी ट्रेडिंग जर्नी को और इजी कैसे कर सकते हो, तो मेक श्योर दैट यू राइट डाउन ऑल दोस क्वेश्चंस एंड टुवर्ड्स द एंड व्हेन वी हैव अ Q&A राउंड आप डायरेक्टली सर को अपने सवाल पूछ सकते हो. तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं. नाउ लेट्स इनवाइट आवर एनालिस्ट एंड लेट्स आस्क हिम कि उनको ये पर्टिकुलर क्लोजिंग देख के क्या लग रहा है. सो धीरेन, गुड आफ्टरनून एंड वेलकम टू द शो. Thank you so much, Sakshi. I hope my audio is clear and loud. Yes, we have seen some more kind of a profit booking, yesterday. So let's discuss what exactly happened on the Friday. So Friday in the morning, the market was bullish. Everything was looking very good. But at the time of closing, we saw a very high level of divergence in Bank Nifty. Not the high level, obviously, but there was some level of divergence was forming in the Bank Nifty. There was this RSI was making the lower low and Bank Nifty was making the higher high. So there was a clear cut divergence, and because of that, we have seen some more kind of a profit booking. That is there. Apart from that, nothing on the geopolitical tension, nothing on the major news side. So yeah, I mean, I believe this could be a normal retracement or normal profit booking only. Post that we can expect some kind of a decent up movement going forward. Now I'm quickly sharing my screen. We'll start with the weekly time frame, and on the weekly time frame, we can see the prices has formed a doji candlestick pattern or doji or a spinning type of a candlestick pattern in the weekly time frame. सो बेसिकली वीकली टाइम फ्रेम में हमें जब भी इस तरीके का पैटर्न मिलता है दैट मीन्स मार्केट इज slightly confused. The buyers and sellers are not very much sure that what the market wants to do, and end up कि कोई भी winner हमें देखने नहीं मिलता. Buyers were also equally active, sellers were also equally active, and there was no imbalance. And हमने वही न्यूट्रल जोन देखा क्लोजिंग के बेसिस पे. So 2 हफ्तों से हमें यही डोजी फॉर्मेशन दिख रहा है. And obviously the good part of about this is that we are not able to break the lows अभी भी सिक्योर्ड है, ये गैप अभी सिक्योर्ड है. दैट मीन्स देयर इज दिस ब्रेकआउट गैप दैट वी कैन कंसीडर, जो हम लोग ने लास्ट वीक भी डिस्कस किया था कि यहाँ पर एक ब्रेकअवे गैप है. एंड वो आई गेस प्रीटी मच we are sure that this is a breakaway gap, but yes, we should get a good follow-up green candlestick pattern that we are not getting. That is something concerning, but we'll see. Maybe by the next week we can get it. So yeah, so that's what I can think on the weekly time frame. Although RSI is still trading in a range, there is no breakout. RMI also, nothing specific is there in the RMI. Although we got the buyer signal in the month of April, and we are continuously moving toward the zero line. Although we are currently up below the zero line, but soon we are going to cross the zero line as well on the Nifty weekly time frame. So this is what I can observe on the weekly time frame. Now if I quickly go toward the daily time frame, में the most important observation on the day of Friday is this candlestick pattern, that is a shooting star. और usually जब ये shooting star candlestick pattern एक resistance पे बनता है या फिर एक high पे बनता है, that means there is something concerning thing is there about the trend.
So this is what I can see. And after a major rally toward the मार्केट ने थोड़ा सा करेक्शन दिखाया, मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट लिया, मार्केट ने फिर से अपसाइड पे पुश करने का ट्राई किया, बट यहाँ पर शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक फॉर्म किया है. तो बेसिकली दिस इज नॉट वेरी मच, I would say, bullishness or bullish के signs नहीं है for the market. So yeah, this is what I can see. This is a bearish candlestick pattern, and going forward, I can see somewhat kind of a profit booking again in the Nifty, or somewhat kind of a retracement again in the Nifty. अब निफ्टी के रिट्रेसमेंट फाइंड आउट करने के लिए देयर कुड बी टू वेज. The first way is this support zone, that is 23,800 as a round figure level. So 23,800 एक क्रूशल सपोर्ट जोन है निफ्टी के लिए, अगर यहाँ से मार्केट नीचे आता है तो. और अदर वे है, वी यूज द फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल. यहाँ से हम लोग प्रीवियस लो से प्रीवियस हाई तक एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रॉ करते हैं, एंड उस केसेस में जो हमें 38% मिलता है, जो कि द फर्स्ट लेवल ऑफ रेजिस्टेंस होता है, वो भी सेम 23,800 लेवल ही है. तो 23,800 का एक क्लस्टर बनते हुए दिख रहा है, जिसमें फिबोनाची लेवल भी है, जिसमें सपोर्ट जोन भी है, तो दोनों ही दिख रहा है. तो मे भी हो सकता है हम 23,800 को टच कर सकते हैं वापस, और वहां से ही बाउंस ले लें, या फिर मे भी हो सकता है ये बहुत ही छोटा रिट्रेसमेंट है, हम कुछ थोड़ा सा और नीचे जाके वापस से रिकवरी भी दिखा सकते हैं. तो ये दो साइड्स मुझे दिखते हैं. Okay. ऑल द मार्केट इज नॉट वेरी मच क्लियर, but these are the two things which I can see on the Nifty side as of now. We'll quickly just cover the wave counts as well, कि wave counts में मुझे क्या दिख रहा है, कि wave count के according, see, this is for sure, this is wave 1, but wave 2 is not yet confirmed because of today's candlestick formation. And the other way is, this could be this A, B, C, and this could be the X wave. Then again, we can get a ABC. So overall, this could be the W, X, and Y that can be, in the formation. And again, in that cases, we can get the 23,800 ka level. So I hope, Sakshi, I am able to, explain the analysis clearly. And that's the view on the Nifty side. 23,800 एक अच्छा support zone है. Market चांसेस है वहां तक आ सकता है. एंड इफ अगर हमें वापस से 24,200 के ऊपर का ब्रेकआउट मिल जाता है, देन वी आर गुड टू गो, और मार्केट तेजी में ही रहेगा, मार्केट वुड बी बुलिश. परफेक्ट. यहाँ पे धीरेन ने विद द वेव काउंट्स काफी बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन किया है कि उनको क्या लेवल्स दिखाई दे रहे हैं इन निफ्टी. बट धीरेन, मूविंग नाउ ऑन टुवर्ड्स बैंक निफ्टी, आपको क्या लगता है आज की जो थोड़ी बहुत जो स्लो हम कह सकते हैं गिरावट हुई है बैंक निफ्टी में, गिरावट नहीं कह सकते एक्चुअली, हमें जरूर 36 पॉइंट्स बैंक निफ्टी ऊपर क्लोज करता हुआ नजर आया था, लेकिन व्हाट डू यू थिंक, व्हाई डिड इट क्लोज विद सच स्लो बुलिशनेस? Yes, you rightly mentioned Bank Nifty negative close नहीं किया, but if you compare this Bank Nifty from the day open, yesterday इसका जो ओपनिंग था, या फिर उनके yesterday का जो हाई था, उससे अगर आप कंपेयर करते हो, तो वहां से हमें डेफिनेटली एक सेल ऑफ देखने मिला है, जो कि कहीं ना कहीं एक बेरिशनेस इंडिकेट करता है. द सेकंड ऑब्जर्वेशन इन द बैंक निफ्टी वाज दिस डाइवर्जेंस. आई कैन ऑल्सो सी दिस आरएसआई में यहाँ पर लोअर लो फॉर्मेशन हो रहा था, प्राइस में यहाँ पर हायर हाइस फॉर्मेशन हो रहा था, तो यहाँ पर क्लियर कट एक डाइवर्जेंस फॉर्म हो रहा था, एंड उसकी वजह से भी कहीं ना कहीं एक बेरिश इंडिकेशन थे. प्लस आरएमआई भी ऑलमोस्ट बेरिश क्रॉसओवर देने के बहुत ही क्लोज है. सो दीज आर द कपल ऑफ प्राइस ऑब्जर्वेशन विच आई कैन सी. बेस्ड ऑन दैट, आई बिलीव देयर इज profit booking is expected in the bank nifty. Now that was the one thing. And to answer your question that why we are seeing so slowdown in the bank nifty, and so definitely for that, the answer would be there is nothing bad with the overall market, or overall this bank nifty sector, but obviously the bank nifty has been outperforming from the nifty and from the other indices from couple of days, or I would say couple of weeks also. So based on that, I believe there is profit booking going on in the entire banking sector, and based on that, we can expect a very normal profit booking only in the bank nifty. Now on the support side, where we can expect the support, so पहला support तो मुझे यही दिखता है, 57,100 as a round figure level is going to act as a crucial support zone. Then again, if I draw a Fibonacci retracement tool from the previous lows to highs, then उस केस में जो 38% Fibonacci level आता है, वो होगा 56,400, 450, let's say 450 as a round figure level हम लोग जा सकते हैं. तो 56,450 क्रूशियल सपोर्ट जोन, जो कि सेकंड सपोर्ट होगा. फर्स्ट सपोर्ट होगा 57,100. आई बिलीव पर्सनली कि यहां पर अगर इफ आई ऑल्सो ट्राई टू प्लॉट द वेव काउंट, सो बेस्ड ऑन दैट वी हैव कंप्लीटेड दिस वेव 1, 2, 3, 4th एंड 5th. यहां पर अगर 5th खत्म हुआ है, तो वी शुड डेफिनेटली गो टिल 38.2%. दैट वुड बी 56,450.
सो दैट्स द प्लान साक्षी 38%, 38.2% सपोर्ट जोन है, जो करेक्ट। कि प्राइस लेवल में 56,450 है, जो कि थोड़ा सा लग रहा है एक्सपेक्टेड है। ऑन द अदर एंड द अदर पॉसिबिलिटी आई कैन ऑल्सो शो यू दिस कि अगर बैंक निफ्टी यहाँ से कंटिन्यू करता है ऊपर जाने का, तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस वुड बी 60,000 एज एन राउंड फिगर लेवल। सो ये दो व्यू हैं। आई एम नॉट वेरी मच बेरिश, आई एम नॉट वेरी मच बुलिश, बट आई बिलीव समवॉट प्रॉफिट बुकिंग शुड कम बाय द नेक्स्ट वीक। ओके, सो थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग की अपेक्षा धीरेन अभी भी कर रहे हैं बैंक निफ्टी में। बट आपको क्या लगता है धीरेन, एनी अदर डेटा पॉइंट ऑन निफ्टी और बैंक निफ्टी, लुकिंग एट द सेंटिमेंट इंडिकेटर और मे बी एट द राइटर्स लेवल्स, कोई चेंज आपको नजर आया था? Sure. So if I go toward the options data, and options data mein, the interesting observation was there in the PCR data. So currently you can see this PCR data is at the 1.04. But if you remember, when we were doing the live in Friday morning, the PCR data was at the 1.3, 1.35 something kind of level. And after the live only, the PCR data has been gone to 1.4 as well. So because of that, PCR has reached to the extreme zone, OI PCR. तो उसकी वजह से भी जो कॉल में राइटिंग चल रही है, सॉरी आई मीन द पुट में राइटिंग चल रही थी, वो बहुत ही एक्सट्रीम लेवल से बढ़ गई थी। एंड बिकॉज ऑफ दैट वी हैव सीन सम प्रॉफिट बुकिंग इनटू द मार्केट। सो ये मुझे कुछ ऐसे इंडिकेशन देखने मिल रहे हैं पीसीआर के एंड से। इफ आई ऑल्सो गो टू दी ओपन इंटरेस्ट डेटा, ओपन इंटरेस्ट में भी मुझे वही दिख रहा है कि यहाँ पर आई कैन सी बाय द एंड ऑफ द डे the put writer are very, I mean they have unwind their position, couple of the strike price we can see unwinding chal raha hai put ke end se. But if I see the open interest on the call side, I can see some massive build up in the call side. तो यहाँ पर यहाँ पर आप काफी सारे कॉल साइड में देख सकते हो, कॉल में ओपन इंटरेस्ट बढ़ते हुए दिख रहा है। दैट मीन्स कॉल राइटिंग बहुत ही एक्टिवली, कॉल राइटर्स आर एक्चुअली एक्टिव इन टू द मार्केट। सो ओवरऑल जो ब्रेथ या ओवरऑल एक इंडिकेशन बनते हुए दिख रही है एक ऑप्शंस के डेटा के एंड से, इज ओवरऑल बेरिश ही दिख रही है। एटलीस्ट फॉर द मंडे आई बिलीव दिस इज बेरिश। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, यूजुअली व्हाट वी हैव सीन ऑन द ग्लोबल मार्केट, स्पेसिफिकली द यूएस के जो प्रेसिडेंट है, वो यूजुअली दे डू समथिंग ऑन द वीकेंड इटसेल्फ। तो उसके बेसिस पे भी वी कैन actually expect something on the weekend. So maybe prices or the market is discounting those things, or maybe something else is there. I'm not sure, but definitely कुछ ना कुछ slightly मंडे ट्यूसडे के लिए हमें एक slightly bearish indication मिल रहे हैं मार्केट से। ओके, परफेक्ट। आगे बढ़ते हैं धीरे, मूविंग सॉरी, मूविंग ऑन। यहाँ पे अगर हम जाए टुवर्ड सम सेक्टर्स नाउ, निफ्टी बैंक निफ्टी के बारे में तो आपने सभी कुछ बता दिया है। सेक्टर्स के बारे में जैसे हम बात कर रहे थे कि कुछ ऐसे सेक्टर्स हो सकते हैं जहाँ जिनकी वजह से थोड़ा और पुश मिले निफ्टी को ऑन दी अपसाइड, बट उसी के साथ साथ ऐसे भी सेक्टर्स हो सकते हैं विच कैन ड्रैग निफ्टी टुवर्ड्स द लोअर लेवल्स। सो अगर आप बता दें ऐसे कौन से सेक्टर्स हैं जहाँ पे अगर एक अपमूव की शुरुआत होती है तो ये सारे सेक्टर्स कैन रिजल्ट इन दैट। तो फर्स्टली एज आई मेंशन कि मेरे को थोड़ा सा निफ्टी में प्रॉफिट बुकिंग दिख रहा है। आई एम एक्सपेक्टिंग सम बेरिशनेस इन द निफ्टी, सो आई वांटेड टू डिस्कस फर्स्ट द बेरिश सेक्टर कि किस sectors में we can get some bearish opportunities. So on that note, the first would be the IT sector. IT sector is not able to breaking out the high levels, and I can also draw this falling wedge kind of a pattern. So this should be, this overall this pattern should be something like A, B, C, एंड यहाँ पर डी होगा, यहाँ पर ई लेग का एक फाइनल डाउनसाइड लेग आ सकता है। सो आईटी स्टिल आई बिलीव देयर इज सम बेरिशनेस इज देयर, एंड वी कैन बी बेरिश ऑन द आईटी सेक्टर इफ द ओवरऑल ब्रॉडर मार्केट कंटिन्यूज टू बी बेरिश। अपार्ट फ्रॉम दैट, इफ आई गो टुवर्ड द निफ्टी पीएससी इंडेक्स, निफ्टी पीएससी इंडेक्स में एज वी मेंशन द फ्राइडे मॉर्निंग लाइव कि यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन है। ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन के बाद यहाँ पे एक अच्छी गिरावट देखने मिल रही है। वी आर एबल टू सी सम गुड फॉल, एंड दिस RMI is also giving some bearish crossover signals. I mean, we haven't got it, but obviously by the Monday or Tuesday we are going to get it. We are also rejecting from the zero line only. So based on that, I believe PSE index maybe we can get some good bearish opportunities as well. So these are the two index, and yeah, metals obviously, metals में भी एक अच्छा support level का breakdown दे चुका है। If I draw this support zone, so previous जो zone था उसका यहाँ पर हमें breakdown होते हुए दिख रहा है। So that could be one of the interesting bearish sector for the next week. So these are the few, these are the three bearish sector. Now if I go to the bullish sector, and उस cases में firstly we have the Nifty Auto. निफ्टी ऑटो ने बहुत ही अच्छा ट्राइंगल ब्रेकआउट दिया है। ट्राइंगल ब्रेकआउट देने के बाद प्राइस ने थोड़ा थोड़ा नहीं, काफी कुछ दिनों से कंसोलिडेट किया, एंड आफ्टर दिस कंसोलिडेशन वी आर सीइंग अ वेरी स्ट्रॉन्ग bullish candlestick pattern. So if on Monday, if we continue to do this, continue to form this bullish candlestick pattern, we can expect the continuation of the bullish rally in the Nifty Auto itself.
So that's there. Nifty Auto काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है, एंड अपार्ट फ्रॉम हम्म। दैट लास्ट वुड बी द निफ्टी रियल्टी. रियल्टी ने भी कहीं ना कहीं एक चैनल का ब्रेकआउट देते हुए दिख रहा है, ऑल्दो द एट द टाइम ऑफ क्लोजिंग द कैंडल इज वीक, बट आई बिलीव somewhat kind of a strength is still remaining in the Nifty Realty. So with this, these are the couple of sector. Nifty Realty, Nifty Auto is looking bullish. On the bearish side, Nifty IT, Nifty Metals, and Nifty PSE is looking bearish. ओके परफेक्ट। आई थिंक सेक्टर्स के ऊपर भी धीरे ने अपना व्यू काफी अच्छे से प्रेजेंट किया है यहाँ पे। मूविंग ऑन, अ लॉट ऑफ पीपल आल्सो वांट टू नो कि कमोडिटीज में एग्जैक्टली उनको क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए, क्योंकि काफी न्यूज आते हुए नजर आ रहे हैं। सो एनीथिंग ऑन द कमोडिटीज धीरे जो आपको टेक्निकल्स देख के लग रहा है? See, if you are planning commodities for the next week, I would say gold may plan for some recovery because there is this bullish divergence I can see from the RSI side. RSI में bullish divergence है in the gold. So this is the technical chart of gold, and gold में bullish divergence है where prices are making the high rise. Sorry, the RSI is making the high rise and prices are making the lower lows. So if we get a good bullish candlestick pattern and a follow-up green candle, then we can expect some decent level of recovery. That would be that should be till 4,150 or 4,200 levels. Currently, the prices are at the 4,060 something level पे चल रहा है, but at that time we can expect some recovery as well in the gold. So gold में ये लग रहा है कि एक bounce back आना चाहिए. Similar kind of a case is also there in the silver. Silver में भी although silver में we haven't got this divergence or something, but definitely RSI is at the oversold zone. 27 के level पे चल रहा है RSI, and उसके बाद we can expect some at least some cool down in the RSI side. तो उसमें एक recovery silver में भी देखने मिल सकती है. On the other hand, dollar index is making higher highs, or we are seeing some exhaustion from the candlestick pattern. RSI भी एकदम extreme zone पर पहुंच चुका है, currently at 74. So based on it, वहां से भी somewhat profit booking we can expect in the dollar index. So dollar index पर profit booking आता है तो gold and silver के लिए वो एक bullish indication होगा. So this is what I'm expecting at least in coming week. Obviously not by the Monday or Tuesday, but at least आगे आने वाली वीक में I can expect these kind of a price action in the commodities and this dollar index side. ओके। Lastly, crude oil में भी सेम व्यू है. Crude oil has reached with the extreme oversold zone, and थोड़ा सा यहाँ पे कुछ हमें बाउंस बैक मिलता है, थोड़ा सा ग्रीन कैंडल मिलती है, तो that would be a good buying opportunity for a retracement trade, not for a trend reversal trade, but एक upside पे retracement आ सकता है. तो उसके लिए अगर शॉर्ट टर्म पे हमें if you want to bet it, we can bet it for a very short term on the upside. ओके परफेक्ट। तो कमोडिटीज के ऊपर भी यू हैव गिवन अस योर व्यू। नाउ लास्टली, ऐसे कोई स्टॉक्स दे रहे हैं, क्योंकि इस हफ्ते स्टॉक्स में काफी हमें अलग अलग मोमेंटम देखने को मिली थी। एनी स्टॉक्स फ्रॉम आवर इंडिकेटर्स दैट यू थिंक जिनको हम थोड़ा रडार पे रख सकते हैं फॉर द नेक्स्ट कमिंग वीक? I'm sorry, your audio got lagged. Can you repeat it? Yes, I was just asking if you can suggest a few stocks from the stack indicators जिनको हम रडार पर रख सकते हैं for the next week. Sure. So for that, there are a couple of things. There is OI interpretation is there, and there are a couple of things. But I would like to see some different ways and different approaches. I would like to see the RMI crossover. तो यहाँ पर मैं सबसे पहले जाऊंगा एनालिसिस में. सॉरी, यहाँ पर मैं सबसे पहले जाऊंगा डिस्कवरी में, एंड देन डिस्कवरी में जाके देर इज दिस स्क्रीनर में अब नाउ द पॉइंट इज आई वांटेड टू लुक फॉर द सेलिंग अपॉर्चुनिटीज, राइट? द मार्केट इज एक्सपेक्टेड टू बी बेरिश. तो मैं यहाँ पर आरएमआई में जाऊंगा. आई एम एट दिस आरएमआई इंडिकेटर. आरएमआई में जाके आई विल सेलेक्ट the sell signal on the daily time frame. So monthly time frame, I will remove this filter. I will click on the all, and daily I will select the new sell and sell signal. And within the basket, I will select say some different sector. So I will click on select, unclicked on all, and sector indices में जाके I will click on IT. First would be the IT, then would be the metals, then would be the PSE. So PSE, I guess not available in this book. Yeah, BSU. Yeah. So maybe okay. PSE as of now I cannot see it. Maybe in the broader index या यहाँ पर कहीं हमें और पर मिल जाएगा. But yeah, as of now we'll go. Yeah. Oh, it should be over there. Nifty PSE. So it's there in the this broader based indices में we can see the Nifty PSE. So just let me select, yeah, Nifty PSE. So we are getting many. I'm sorry. So yeah, we are getting many stocks which are giving sell signal.
तो सेल में मैं सेल को हटा दूंगा एंड आई विल ओनली फोकस ऑन न्यू सेल सिग्नल। तो न्यू सेल में वी आर गेटिंग दीज फोर स्टॉक्स। इसमें पहला है अपोलो। अपोलो इज हैज गिवन दिस बेरिश क्रॉसओवर। और यहाँ पर सॉरी, अच्छा, दिस इज ऑन दी मंथली टाइम फ्रेम, सो आई विल क्लिक ऑन द डेली टाइम फ्रेम। सो इन द डेली टाइम फ्रेम वी आर गेटिंग दिस बेरिश क्रॉसओवर। एंड उसी के साथ साथ हम देख सकते हैं प्रीवियस ट्रेंड भी बेरिश था। आई कैन सी दिस लोअर हाइज लोअर लोस फॉर्मेशन। आई विल जस्ट रिमूव द बॉलिंगर बैंड फॉर क्लियरिटी। सो यहाँ पर हम देख सकते हैं देर इज दिस लोअर हाइज लोअर लोस फॉर्मेशन इज देयर। तो दैट इज देयर बेरिश क्रॉसओवर मिल रहा है। एंड प्रीवियसली यहाँ पर जब हमें बेरिश क्रॉसओवर यहाँ पे मिला था, वी हैव सीन दिस शार्प मोमेंटम टुवर्ड द डाउन साइड एंड सिमिलर हम लोग को आई मीन काइंड ऑफ अ सिग्नल मिल रहा है। सो दैट इज देयर अपोलो वुड बी द वन गुड कैंडिडेट। देन बेल इज देयर। बेल इज ऑल्सो गिविंग सम बेरिश क्रॉसओवर। यहाँ पर मुझे एक अच्छा सपोर्ट दिख रहा है एंड अगर इस अच्छे सपोर्ट का ब्रेकडाउन भी हो जाएगा दैट वुड बी अनदर कंफर्मेशन। Then Hindustan Zinc is also there, that is giving the bearish crossover. And lastly IRCTC is also there, जो कि काफी consolidate कर रहा है। And once we get a breakdown of this consolidation along with the confirmation from the RMA bearish crossover, then we can expect some good momentum toward the downside. And उसी के साथ साथ I will just Okay. quickly discover few of the long trades also. So I will quickly remove this Nifty IT, Nifty Metals, Nifty PSEs, एंड यहाँ पर मैं बास्केट में जाके सिलेक्ट करूंगा इंडाइसिस में जाके। दैट वुड बी जस्ट सेलेक्ट ऑल। यहाँ पर जाके मैं सिलेक्ट करूंगा निफ्टी ऑटो एंड निफ्टी रियल्टी। यहाँ पर आ गए एंड आई विल रिमूव दिस फिल्टर। आई विल क्लिक ऑन दी बाय एंड न्यू बाय। तो न्यू बाय में जो सबसे पहला मुझे सिग्नल आ रहा है दैट इज इन दी मारुति। मारुति में मुझे न्यू बाय सिग्नल देखने मिल रहा है। एंड आई कैन ऑल्सो सी द प्राइसेस आर ट्रेडिंग इन दिस कंसोलिडेशन जोन। सो ये जैसे ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आ जाएगा तो देन उसके बाद वी कैन एक्सपेक्ट सम गुड मोमेंटम टू विद द अपसाइड। रेस्ट देयर आर कपल ऑफ मोर स्टॉक्स विच आर देयर इन दी ऑलरेडी बाय सिग्नल। सो यू हैव टू जस्ट लुक एट द प्राइस एक्शन कि प्राइस एक्शन क्या बोल रहा है। मे बी लाइक डीएलएफ में वी आर टचिंग दिस 40 exponential moving average. Oh, sorry, 20. This is in 9. I will just quickly change this to 40 exponential moving average. हाँ, सो यहाँ पर मे भी हो सकता है यहाँ पर प्राइस कुछ थोड़ा सा बेस वगैरह फॉर्म कर ले। प्रीवियस जो सपोर्ट जोन था, आई मीन प्रीवियस रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट पे यहाँ पर एक बेस फॉर्म कर ले एंड इट कैन गो टू दी हाई लेवल्स। सो दी इन दिस वे देयर आर कपल ऑफ स्टॉक्स आर देयर फ्रॉम दी फ्रॉम द सेक्टर विच वी आर थिंकिंग दैट इज एक्सपेक्टेड टू डू वेल इन द नेक्स्ट वीक. So yeah, based on that, we can expect some good momentum in the following stock on the upside, and bearish opportunities are also there that we discussed earlier. परफेक्ट। आई थिंक सारे ही यहाँ पे डेटा पॉइंट्स हमने डिस्कस कर लिया है, मे इट बी द इंडाइसेस, सेक्टर्स, कमोडिटीज एंड फ्यू स्टॉक्स जिन पे आप अगले हफ्ते ध्यान रख सकते हो एज वेल। सो टुवर्ड्स द एंड, धीरेन, एनी एडवाइस और एनीथिंग एल्स दैट यू वुड लाइक टू शेयर विद द व्यूअर्स? So maybe by the next week, we can expect somewhat kind of a profit booking. That means the next week, entirely next week is not going to be bearish, but next week में थोड़ा सा profit booking आ सकता है, तो we should be ready for that. And lastly, on the disclaimer side, so whatever the stocks and asset class we have discussed today are just for the education purpose only, and I am not recommending any kind of a buy and sell signal over here. Still, if you are liking my view and if you want to trade personally, do trade with a proper risk management. एब्सोल्युटली, प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ आगे बढ़ना काफी नेसेसरी है। इसी के साथ साथ अ फ्यू इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट फॉर ऑल द व्यूअर्स ओवर हियर। वी आर गोइंग टू बी हैविंग अ वेबिनार ऑन दिस संडे, दैट इज 20th June. सो मेक श्योर दैट यू अटेंड इट. इट इज गोइंग टू बी ऑन अ वेरी स्पेसिफिक टूल, दैट इज आरआरजी। आरआरजी के ऊपर ये वेबिनार होने वाला है एट 10 AM दिस संडे 28th June. मेक श्योर दैट यू रजिस्टर फॉर द वेबिनार. द लिंक इज ऑलरेडी देयर पिन्ड इन द कमेंट सेक्शन, सो उस पर रजिस्टर करना मत भूलिएगा. इट इज जस्ट सो दैट वी कैन share you the Zoom link on the day of the webinar. It is just so that we can share that link with you. No nothing other than that. And moreover, it is free of cost. So make sure that you avail it. इसी के साथ साथ हम आपसे विदा लेंगे, लेकिन विल मीट यू ऑन मंडे एट 11:30 AM sharp. तब तक के लिए थैंक यू एवरीवन.